he continue to run the Sarkar from jail? Is that even possible? Those are the big questions which everyone seems to be asking today. The Aam Aadmi Party, though, says that he certainly will. He will remain the Chief Minister of the state. But for the first time in a Times Network exclusive, Chief Minister Arvind Kejriwal yesterday confirmed to our colleague Pulkit Nagar that he will not step down as the Chief Minister of the state. अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे। ये सवाल मैंने कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल से पूछा तो उनका जवाब नो था। यानी कि जो बात आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद ये तमाम कह रहे हैं कि सरकार जेल से चलेगी, उसी पर अरविंद केजरीवाल के इस नो ने मोहर लगा दी और ये साफ कर दिया कि पार्टी की यानी कि आम आदमी पार्टी की रणनीति पूरी तरीके से ये है कि वो जेल से सरकार चलाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए भले ही कोर्ट में जाना पड़े, अब ये कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देगा या नहीं, इस पर आगे की चीजें डिपेंड करेंगी, यानी कि आगे के फैसले निर्भर करेंगे। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल ने नो कहकर, इस्तीफे की बात से नो कहकर ये साफ कर दिया कि पूरी तरीके से वो इस पक्ष में है कि इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। और एक बड़ा संदेश आम आदमी पार्टी इसके जरिए देना चाहती है, वो ये कि वो अब भी ईडी की इस कार्रवाई को गैर कानूनी मानती है, जो बात वो शुरू से कहती आई है। और यही वजह है कि इस्तीफा ना देकर वो एक संदेश ये देने की कोशिश करेगी। केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी 6 दिन? सर केजरीवाल जी सरकार दिशा लेके आती है। केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी 6 दिन? सर केजरीवाल जी सरकार दिशा लेके आती है। केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी 6 दिन? सर केजरीवाल जी सरकार दिशा लेके आती है। This is when Kejriwal was asked yesterday on as to how the government will run. Kejriwal did not give a direct answer, but also while he was entering the courtroom yesterday, he said his life is dedicated to the nation. भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफ़रत नहीं करनी, वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। My colleague Rishabh is live with us on the broadcast. Rishabh, yesterday we heard how Arvind Kejriwal said that his life was dedicated to the nation, and today, interestingly, his wife Sunita has addressed the people. She has read out a message from Arvind Kejriwal, and there also she seems to be relaying the same message. But what's very important is the fact that she says that don't worry Delhiites, Kejriwal will continue fulfilling the promises. All the promises made to the people of the city will be fulfilled. But the question remains, who will fulfill them? How will Kejriwal delegate his duties as the chief minister from inside the jail? Well, definitely that question is something that has been, the most priority question for everyone who is following up this news, for everyone who is in Delhi, that how will the government function given that the Chief Minister himself has been arrested. Right now he is in Enforcement Directorate custody till 28th of March, and after that remains to be seen whether he'll go to JC or the ED remand will continue, or whether he'll get a bail, any possibility on 28. But for now the major question is, how will the government run even for this 1 week when Arvind Kejriwal is in ED custody? Remains to
he doesn't have any portfolio. All the portfolios are with ministers. He is chief minister, but without portfolio. But again, the cabinet do report to him, and hence him being in action is important. As of now, he's incapacitated. Remains to be seen how things unfold there. But one thing is very clear: BJP wants resignation from Arvind Kejriwal. We heard it from various spokespersons of BJP, senior leaders of BJP, that Arvind Kejriwal cannot be running the government from jail. He cannot be the chief minister who is in jail and the government in Delhi. Apart from that, if you see the way Sunita Kejriwal came to address the supporters, the media, everyone, it is a unique style in which Arvind Kejriwal till date has been addressing Indian flag, Bhagat Singh's photo, B.R. Ambedkar's photo, and the person speaking. This time around, it wasn't Arvind Kejriwal. This time around, it was Sunita Kejriwal, and that shows that there is a kind of hinting coming in from Aam Aadmi Party as well, that in case Arvind Kejriwal cannot run the government, what can happen? Nothing official on that for that matter, but there have been a lot of talks within Aam Aadmi Party as well, that can Sunita Kejriwal take over from her husband in case the arrest happened. Back then the question was in case the arrest happened. Now the arrest has taken place. The senior leaders, be it Saurabh Bhardwaj or be it Atishi, they have been protesting out on streets. They have been detained briefly as Question well. which everyone is asking: will we see the chief minister's wife eventually take over on the CM's chair? Is that a possibility which the AAP is hinting at? The way today we heard that message given by Mrs. Kejriwal. That of course remains a big question. But Rishabh, stay with us, because there's a lot of politics also happening around it. Because as far as the Aam Aadmi Party is concerned, the Aam Aadmi Party chief is of course highlighting that his life is dedicated to the nation. But when it comes to the Aam Aadmi Party leaders, they seem to be backing the same message, saying that Arvind Kejriwal is going to continue as the chief minister. He will continue to lead the national capital from inside the jail. भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। आज जो इस देश में हो रहा है वो कोई जांच नहीं हो रही है, वो कोई केस नहीं चल रहा है। आज इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और ये जो केजरीवाल जी के साथ किया गया है, ये पूरा का पूरा अन्याय है, और ये एक छोटी सी पार्टी को कुचलने की, दबाने की, खत्म करने की एक कोशिश है। अब जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो अब आगे की स्ट्रेटजी बनाएंगे। तानाशाही का वो आलम है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर भी सरकार अपनी पूरी चला रही है, तो काहे का इलेक्शन कमीशन है? अरविंद केजरीवाल कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। And as far as the INDIA bloc is concerned, viewers are continuing to back Kejriwal. Listen into all the reactions. तो 2000 का चुनाव जो है वो दिनों दिन बहुत कठिन होता जा रहा है बीजेपी के लिए, और भी नेताओं को इस प्रकार से उनका जो कार्यक्रम चल रहा है तकलीफ देने का, वो चलता रहेगा। किसी को भी अरेस्ट हो सकती है, कानून नहीं है, जंगल राज चल रहा है, जैसे रशिया में पुतिन का चल रहा है, चाइना में चल रहा है, यही पैटर्न यहाँ चल रहा है। इसे गुजरात पैटर्न बोलते हैं आजकल। हम मानते हैं ये देश का बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है। जेल में रहकर भी काम कर सकते हैं आपके खिलाफ। इलेक्शन घोषित हो चुके हैं और एक सरकार है जो 10 साल से यहाँ स्थापित है। आप उन पे हाथ डालते हैं, उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। यदि आप पे एविडेंस थी, इतना सब कुछ था, तो आपने उसी समय ये कार्रवाई क्यों नहीं की? ये तो सारे एविडेंस में दे चुका था। और मैं आपके सामने फिर इस बात को कह रहा हूं कि एक चिट्ठी मैं लिखता हूं लगभग 3/6/2020 को। मैंने ये दावे के साथ कहा था कि सोम ग्रुप की जो कंपनी है वो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि देती, क्यों देती है? और जबकि यही कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। लोकतंत्र में सबके लिए फील्ड तैयार इक्वली होना चाहिए, सबको मौके दिए जाने चाहिए, सबके पास जो एसेट्स हैं, जो उनके पास सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको प्रयोग करने देना चाहिए, उनको मौके देने चाहिए अपनी बात रखने के। ये कार्रवाई पे प्रश्न क्यों ना उठे?
देखिए, ऐसे पैसों में मनी ट्रेल सबसे इम्पोर्टेंट होती है। भाजपा ने आरोप लगा लिया, ईडी ने उस पर गिरफ्तार कर लिया केजरीवाल को, पर सच्चाई तो उल्टी निकल रही है। जो आरोप लगाया है 55 करोड़ का शरद रेड्डी का, वो तो फार्मा कंपनी के मालिक है और उनका जो पैसा गया है उसके तो पूरे के पूरे प्रूफ हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में। वही शरद रेड्डी या उनके सहयोगी पैसा दें तो अरविंद केजरीवाल जेल में और भाजपा बाहर कैसे? Okay, it's very interesting, Rishabh. You know, on one hand, you have, of course, the BJP, which is questioning the Aam Aadmi Party's greed for power. And interestingly, on the other, you have the INDIA alliance. One would expect them to back Kejriwal, but it looks like many of AAP's alliance partner, INDIA partners, seem to suggest that it's okay to run the government from jail. Well, definitely. See, the friendship that we are seeing, the unanimity that we are seeing right now in India bloc is unparalleled. We haven't seen these parties per se coming out so open in support of Aam Aadmi Party, which include the Congress itself. Congress has been accusing Aam Aadmi Party of corruption, Aam Aadmi Party of irregularities, Aam Aadmi Party of not working in Delhi. But this time around, there has been a very concrete support that has come in from Congress's way as well. Shiv Sena, Uddhav Thackeray faction, the Sanjay Raut has come out very clearly in support of Aam Aadmi Party. The way these leaders are suggesting that, okay, the government can be run from the jail as well. In Delhi, there is an alliance between Aam Aadmi Party and Congress. But the opposition leaders do understand that the agency's noose around their neck has been tightened as well. The way Sanjay Raut is under scanner, we have seen Hemant Soren already going to jail. Manish Sisodia is in jail. There are Congress leaders also who have various issues with the agencies. So the these agencies have become point taken, Rishabh. We also have Mr. Nalan Kohli of the BJP on the phone line with us. Sir, what do you have to say about the Aam Aadmi Party's plans? Jailhouse governance is what Arvind Kejriwal is looking forward to. His wife delivering the message saying that Delhiites need not worry, every promise will be fulfilled. The Aam Aadmi Party owes a serious explanation to the people of Delhi and the other places where they have gone before the people. They are a party that Mr. Kejriwal came on the famous slogan of that there will be no corruption, I will wipe out corruption, I will fight against corruption. On the contrary, what has come out is that the Aam Aadmi Party, led by Mr. Arvind Kejriwal and his colleagues, have indulged in decisions that clearly seem to indicate that decisions were not as per procedure and indicate towards mass corruption, especially the liquor scam or the excise scam. Now, Mr. Kejriwal, being the Chief Minister, is the overall in charge of the government of Delhi. He's the Supreme Leader of the Aam Aadmi Party. His two ministers, Mr. Manish Sisodia and Mr. Satyendra Jain, and then there is his Member of Parliament, Mr. Sanjay Singh, they are currently under investigation and are not getting bail. Now, for Mr. Kejriwal to start denying summons from the Enforcement Directorate, which is investigating the matter, started pointing out to whether he has something to hide. He had excuses, not answers. Finally, the Enforcement Directorate has arrested him when he got no relief in terms of protection from the court after he ignored 8 summons in a row on some excuse or the other. Now we have a strange situation where his party is screaming about democracy, level playing field, and at the same time talking about Mr. Kejriwal continuing as the Chief Minister of Delhi while he is in jail. This also shows that the Aam Aadmi Party is desperate for power and will go to any extent in dropping all constitutional norms in ensuring that Mr. Kejriwal somehow holds on to office. All right, sir. Thank you for joining us. As far as the BJP is concerned, BJP citing morality and propriety, saying that Arvind Kejriwal must step down. Aam Aadmi Party says, hey, he's locked in but not locked out. War of words continuing. So will our focus on this big story. We step into a short commercial break. News and updates on the other side. Don't go anywhere.